रिकॉर्डिंग चालू हो गया. So we have covered this much. Exercise 3.3 in the second third problem है कोई तो y is equal to 3x minus 1 whole thing raised to 1 by 3, and so these are the steps that you have to do. We have used the log, correct? तो ये हमारा ये step में log, we took log, that's the first step. Then we have taken this part, that is the second step, and this is all the second step. We have used the laws of logarithms, right? Now what we have to do is take the derivative. So ये log y है तो इसका derivative लेंगे. It's that simple. Log y. Okay, and so differentiating. The next step is differentiating above equation with respect to x. We get 1 upon y dy by dx is equal to 1 by 3 into d by dx of log 3x minus 1 minus d by dx of log of 2x plus 3. It's 3 only, na? Minus d by dx of 2 into log of 5 minus x. So therefore 1 upon y dy by dx is equal to 1 upon 3 into brackets. Log of 3x minus 1 का डेरिवेटिव आएगा 1 upon 3x minus 1, correct? Into d by dx of 3x minus 1, chain rule, minus 1 upon 2x plus 3 into d by dx of 2x plus 3 minus 2 into, I'll write this step, d by dx of log of 5 minus x. So the reasons for this basic is d by dx of log f of x is 1 upon f of x into d by dx of f of x. And so therefore 1 upon y into dy by dx is equal to 1 upon 3 into 1 upon 3x minus 1, and d by dx of 3x minus 1 is 3 into 1 minus 0, correct? Minus 1 upon 2x plus 3 into d by dx of 2x plus 3 is 2 into 1 plus 0 minus 2 into 1 upon 5 minus x into d by dx of 5 minus x brackets. d by dx किसी भी उधर ही बात क्या उधर ही d by dx का log of 5 minus x है उसका डेरिवेटिव. So 1 upon 5 minus x into d by dx of 5 minus x. Okay? So that becomes, you are not able to see as much. Okay. So this is equal to 1 upon 3 into 3 upon 3x minus 1 minus 2 upon 2x plus 3, and this is minus 2 upon 5 minus x into 0 minus 1, okay, which is equal to 1 upon y dy by dx is equal to 1 upon 3 into 3 upon 3x minus 1 minus 2 upon 2x plus 3 plus 2 upon 5 minus x, and therefore dy by dx is equal to
1 upon 3y. We have taken the derivative, so now shift y on the right hand side. So dy by dx is 1 upon 3y into 3 upon, इसे कॉपी करना है, 3x minus 1 minus 2 upon 2x plus 3 plus 2 upon 5 minus x. ती ट्रॉमा वाली मुलगी कुठे गेली? नाही आली का आज? उसका ट्रॉमा हो 1 upon 3. And what was y? Y is cube root, correct? It is cube root of 3x minus 1 divided by, it was 2x plus 3 into 5 minus x the whole square into 3 upon 3x minus 1 minus 2 upon 2x plus 3 plus 2 upon 5 minus x. Okay, this is by equation 1. Okay, every problem is actually speaking identical, same things, वही चीज रिपीट होता है. What is happening is you are trying and seeing कि हाँ ये problem 3x minus 1 2x plus 3 को you are trying and learning it. 3x minus 1 ऐसे करना है, 2x plus 3 को ऐसा करना है, फिर 3x minus 2. That doesn't work. Learn on the principle. उसका principle क्या है? Okay, once you get the principle, everything is good. Right? जैसे like some people and they study accounts also like that. मतलब ये आया तो इसको डेबिट करना है, इसको आया तो इसको क्रेडिट करना है. But that's okay. You can go for some part like that. But on the long run, you can't do that. Correct? Every individual item को डेबिट करने क्रेडिट करने याद रखोगे, हो जाएगा. नहीं ऐसे नहीं हो जाता है. But eventually you will land yourself in trouble somewhere because the logic will be important. You know, the basic logic would be what asset है तो डेबिट करना है. ऐसे कुछ तो रहेगा ना. Correct? So that is the basic. So you have to just check हाँ ये asset है या नहीं है, डेबिट किया, नहीं है नहीं किया, जो कुछ है. That's the logic. Initially you can go क्या तुम्हारा जो कुछ रहता है मशीनरी हमेशा ऐड हो रहा है, you can do that, but eventually you have to recognize it's asset which has been debited, right? Same is over here. You may initially think हाँ ये प्रॉब्लम ऐसे करना है इसको, फिर वो 3 upon 3x minus 1 आता है minus 2 upon 2x plus 1. That's okay, that's correct, nothing wrong with it, but on the long run that won't help you. उसमें तुम भूल जाओगे ना प्रॉब्लम्स कितना लर्न करो. How many problems you learn? Right? There are so many problems. और ये तो डेरिवेटिव्स पे हम लोग और इंटीग्रेशन आने हैं और बाकी के प्रॉब्लम्स आने हैं. तो लर्न करते बैठोगे तो बर्बाद हो जाओगे. Guaranteed बर्बाद. So learn नहीं करना है. Understand the principle. Once you understand the principle, everything will be covered up. मुझे चाहिए टेक्स्ट बुक ना. टेक्स्ट बुक किधर है अभी? ठीक है. सो ये हो गया. अभी क्वेश्चन 3 का फर्स्ट वन. नाउ आई विल जस्ट टेक द फर्स्ट वन. आई विल जस्ट ओके, इट्स वो जो प्लस है ना उधर, दैट इज प्लस नहीं है. इंस्टेड ऑफ दैट प्लस आई विल टेक माई इनटू ओवर देयर. ठीक है. एंड देन वी विल डू द प्रॉब्लम विथ प्लस ऑल्सो. सो लॉग एक्स y is equal to log x raised to x into x raised to log x. ये है ना प्रॉब्लम. ओके, सो इट इज log x raised to x into x raised to log x. Now see, this is multiplication. Okay, ये इधर बीच में मल्टीप्लिकेशन है, and you can see that the problem is of the type f of x raised to g of x या x raised to f of x raised to x वो टाइप में है. सो log तो लेना ही पड़ेगा. Okay, so we'll take log. So this is equation 1, and so log y is equal to log of log x raised to x into x raised to log x. Now I normally won't write this into sign like this because उसमें ना confusion हो जाता है कि वो x sec है.
So we don't want to keep that as like this, direct dot. ठीक है? Okay. Now what is a rule? Use laws of logarithms. Correct? Step 2. So this is log mn. So it will be log of log x raised to x plus log of x raised to, ये x log x है क्या? नहीं, wait. This is x raised to only log x it is. तो ये x नहीं है. So x raised to log x. Okay. And the rule for this is log mn is log m plus log n. So we can still use laws of logarithms, and that is x into log of log x plus log x into log x. Okay. And the reason for that is log a raised to m is m log a. तो ये बन गया x raised to log x. So therefore log y is x into log of log x plus log x the whole square. Again, then, so we have used all laws of logarithms. Now what we have to do? Derivatives. But ये प्रॉब्लम और इसके बाद जो करूँगा, make sure you understand the difference. Therefore, differentiating. So it shouldn't be therefore, it's just differentiating above equation with respect to x, we have or we get 1 upon y dy by dx is equal to d by dx of x into log of log x plus d by dx of log x the whole square, which is equal to x into d by dx of log x plus, it is uv, correct? So it's log of log x. This is a mistake many people did in the paper, वो एक जिसमें x log x था प्रॉब्लम, लोगों ने सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही लिखा, सेकंड uv का लिखा नहीं. So that's why I've been saying कि ये नहीं, जो फर्स्ट टर्म है इसको ब्रैकेट्स में डालो. The moment you put in brackets you realize that you have not written the second term. Okay? और ये तुमको भी अंदाज आ जाता है, हाँ पहले का मैंने डेरिवेटिव ले लिया, uv that is u into dv by dx plus d into du by dx plus, now this is of the type, ये कौन से टाइप में है? f of x raised to n. So it will be 2 log x, correct? 2 log x into d by dx of log x. We had in MCQ similar question. It was log x raised to 5. Correct? MCQ का question था log x raised to 5 था. तो ये भी log x the whole square है. उधर log x raised to 5 था. So 5 log x into d by dx of log x. Of course, it was 5 log x raised to 4 into d by dx of log x, which is 1 by x. ठीक है? So अभी इसको solve करते हैं. So this is equal to, so ये will be equal to x into d by dx of log x is 1 upon log x into d by dx of log x plus log of log x into 1 plus 2 log x into 1 by x. इधर ऊपर एक रीजन रहेगा हमारा लिखना, which is d by dx of
f of x raised to n is equal to n f of x raised to n minus 1 into d by dx of f of x. ठीक है, आगे इधर तक. Okay, we still have to take the derivative. So this is equal to x into 1 upon log x into 1 upon x plus log of log x. Now we don't need the brackets. Plus 2 log x upon x. तो ये फर्स्ट x एंड सेकेंड x इधर कैंसिल हो जाता है. सो दिस इज 1 अपॉन y dy by dx. एंड देयरफॉर सो हमारा डेरिवेटिव्स लेके हो गया. सो नाउ शिफ्ट एवरीथिंग y दैट साइड. सो इट्स dy by dx is equal to y into 1 upon log x plus log of log x plus 2 log x upon x. ठीक है, which is equal to what was y? It was log x raised to x into x raised to log x into 1 upon log x plus log of log x plus 2 log x upon x. This is by equation 1. हो गया. बस क्या है? dy by dx is this. तो the left hand side में लिख दो dy by dx. हो गया. Understood? Easy the problems are. They're not hard. तुम लोग उसको because you go from problem to problem, इसलिए तुमको difficult जाता है, बाकी कुछ नहीं. If you go it as a concept, it's simple. If you go at it as a problem, you learn करने जाओगे तो झंझट है. किधर learn करते हो? I also don't know. If you think मैं 10 साल से सिखा रहा हूँ या 20 साल से सिखा रहा हूँ, पढ़ा है पहले, तो मुझे सबके आंसर बाय आते हैं, इसको इसके बाद ये स्टेप तुमको मालूम नहीं है. The concept is there. Okay, the concept is there. You don't learn individual problem. I don't know. Tomorrow you give me the same problem, I might solve by some other method. मुझे भी पता नहीं. Okay, so you learn it as a concept. Yesterday I was who might call the Bashna. I was telling her same thing. तुम लोग, if you go from problem to problem, you will be straining yourself, stress डालोगे खुद के ऊपर. So it's like you want to ride a bicycle and you're holding the handle as a tight. You're holding the seat also very tight, and then you're trying to pedal. That's not going to work. It won't work because handle tight है तो एकदम ऐसे पकड़ के बैठे हैं, ऐसे रोबोट के जैसे चला नहीं चला सकते साइकिल. Right? For that what you have to do? Little bit loose रखना पड़ता है. Right? And then आराम से pedal करो, जाते हैं. Otherwise struggle. Right? Swimming, how do you do swimming? You have to lose yourself in water. Any person who holds, you ask any swimmer, किसको भी जो सीख रहा है उसको भी पूछो. Okay, that if you jump in the water, if you hold yourself tight, you will sink immediately. The first thing the swimming coaches will tell you is lose yourself. The moment you lose, the muscle का tension जैसे तुम्हारा निकल जाएगा, you start floating. It's difficult. I'm not saying it's easy. It's difficult. Losing yourself in water is not easy. Because डर तो है ना, पानी नाक में जाएंगे, इसीलिए तो टाइट हो जाते हैं ना. उन्हें पानी नाक में नहीं जाना चाहिए, मैं डूबना नहीं चाहिए, यही तो एम रहता है लोगों का. And that is exactly what sinks people. Even the flood waters में वैसे ही हो जाता है ना. So that's the reason. So what you have to do is lose yourself. That water का जो buoyancy है वो तुमको ऊपर रख देगा. In most cases, it's only when you're scared things happen. ठीक है? So same is with all difference. What you have to do? You have to just relax. She does gymnastics. What do you do? Loose, na? Tight like ऐसा. Correct? She does nice gymnastics. Okay. So she can stretch her leg right over here.
How does that happen? By stressing or by losing? Losing. Okay. That's exactly. You have to lose. You have to just understand the concept. Concept समझ लो. Mind free रखो. तुम लोग I am going to tell Monday also in the class. तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे कुछ तो करना है. ऐसे नहीं होता. Just enjoy it. चल रहा है. मजाक चल रहा है. चलने दो. It's Monday for. को बोलना है class में. Yeah, I'm going to tell. So that's exactly how it. Okay, तुम्हें से. Or you'll come for paper also. You come with a stressed mind. मेरे को 15 marks है. मेरे को 15 मिलना चाहिए. तो क्या हो जाते हैं पहले प्रॉब्लम नहीं आए. So then you get stressed. I had planned 15. It doesn't work. Cricketers can't work on stress. मैं जाके आज सेंचुरी मारूंगा. Doesn't work. मैच खेलूंगा. That is correct. Attitude should be I'll play today. Okay, but if you go, I'll make 300 runs today. You're going to fail. You're going to fail. 100% you're going to fail. You might just get out on zero. Okay, there was a batsman named Don Bradman. सुना है ना Don Bradman? So Australia का batsman था. One of the greatest cricketers of all time. So his average in Test cricket that time was around 98 के 99 उसका average. It's almost. I mean Tendulkar and all is what 54, 55, 45 ऐसा सब. His average was 98, 99. Such a good batsman. Okay, and he needed to make 4 runs in that last match of his. 4 run ही बनाना था उसको, and his average would have become 100. That's how it was. Some 4 runs only he had to make. So not even 99, it's 99.98 ऐसा कुछ तो रहेगा. So he had to make only 4 runs, and if he did that, average is 100. But that got him in stress. He got out on the first ball. Last match, average रहेगा. Okay, it's stress. Stress can kill you whether you like it or not. Okay, so stress मतलब relaxed रहो, आराम से हो जाएगा. ऐसे कुछ बहुत रॉकेट साइंस तो है नहीं. करेक्ट. ऐसा नहीं कि ये नहीं आया तो प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू कम एंड हैंग यू. ऐसा तो होने नहीं वाला है. तो करेक्ट ना. सो जस्ट बी फ्री, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. हो क्या रहा है प्रॉब्लम. सेम थिंग विद डांसिंग. इफ यू डांस लाइक द वे आई डांस, यू गोना मेक अ मेस ऑफ इट. राइट. हाउ आई डांस इज यू गिव मी स्टेप्स. स्टेप्स रहते हैं ना. So 1 and then you get 2 and then this is 3. Now if you dance like this, ऐसा थोड़ा देर कर सकोगे, but eventually I get into robotic dancing. So that's how I do. Okay, but actual would be ऐसे घूम के ऐसे ना some flow and then you know that's the way you dance. तो उसमें क्या हो रहा है? You're loosening yourself. Okay, that's exactly how you need to start. Okay, anyways, Monday को वापस बता दूंगा लोगों को. Right. So okay, now the same problem, same terms, but there is a plus sign in between. Y is equal to x raised to log x plus log x raised to x. Whenever this plus sign comes or minus sign बीच में आए, this plus sign or minus sign, don't take log directly. We have to use logarithmic differentiation. True. क्या पहले log x raised to x है क्या? हाँ ठीक है. Actually है तो ठीक है. Okay, so पहले क्या है? log x raised. हाँ ठीक है. It's addition ही है ना. Even if it was multiplication, same thing, same terms. Okay. So when you have addition or subtraction in between, okay, we have to take logarithmic differentiation, but इसको log y नहीं लेते. We don't take it as log y. What we will be doing is we will call the first part as u. तो इसमें थोड़ा सा situation change हो जाता है. We don't take the log directly. The reason for that is, see, we don't have a law that says log of m plus n is log m plus log n. ऐसा कोई law नहीं है. या log of m minus n is log m minus log n. ऐसा law नहीं है. So these laws are not there. So we cannot use logarithms directly. तो हम लोग इसको क्या करेंगे? We will write this as let
u equal to x raised to log x and v equal to log x raised to x. So this is equation 2, the other is equation 3. Okay, so what does y become? Therefore y is equal to u plus v, that is equation 4. Okay, now therefore dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx, that is equation 5. Now what is our aim actually? To find dy by dx. That's the aim. To find dy by dx we need the value of du by dx and we need the value of dv by dx. Now to find du by dx what we need? U. Correct ना? U क्या है? X raised to log x. Okay, so now u is equal to x raised to log x. Right? अभी ये कौन सा टाइप में आ गया? वेरिएबल रेश्ड टू फंक्शन x रेश्ड टू f of x, तो log लेना पड़ेगा. Understand? Now we have to take log. इसका log ले लेंगे. So therefore log u, क्या हो गया? Log u is equal to log of x raised to log x. Now same procedure it follows. Therefore log u is equal to log x into log x. We have used the laws of logarithm. Okay, log a raised to m is m log a. Yesterday there was this problem na, log x raised to x. Correct ना? वो आता है ना ऐसा log y is equal to this. And some people did a mistake. इसका laws of logarithms use करते समय they did like this, x into log of x raised to x. This is wrong. ठीक है, ये log because x raised to, तो ये raised to part जितना है पूरा इधर आ जाएगा. So it should have been x raised to x into log x. But तुमने किया क्या? Many people did. So that's a mistake, and that made the whole problem wrong. तो भले सब कुछ आ रहा था, but वो एक mistake में पूरा गड़बड़ कर. ठीक है? So anyways ये हो गया. अभी ये log u is equal to log x the whole square. Okay, so we have used the laws of logarithms. Now what we have to do? Derivative. Okay, with respect to x, differentiating remember what our target is. We want to find dy by dx, and for that we require du by dx. दो चीज चाहिए, right? So differentiating above equation with respect to x, what will happen over here? We'll get 1 upon u du by dx is equal to d by dx of log x the whole square, which is equal to 2 log x into d by dx of log x, which is 2 log x into 1 by x. So that's same thing, d by dx of f of x raised to n is n into f of x raised to n minus 1 d by dx of f of x. हर स्टेप लिखने के पहले 3 बार सोचो. At least when you're studying at home, before you write every step, 3 times think over it. लिखने के पहले कि ये बराबर है क्या, कुछ दूसरा तो नहीं, गलत तो नहीं जा रहा है. And then write it. ऐसे नहीं कि सॉल्व करते गए आंसर बराबर आए, ऐसे नहीं करते. Okay, go for every step. Is it correct or not? That's how you have to go. Okay, ये आ गया 2 log x upon x आ गया. So what we needed was du by dx. So take u on the other side. So du by dx is u into 2 log x upon x. u क्या था? u was
x raised to log x, na? So it's x raised to log x into 2 log x upon x. This is by which equation? सेकेंड या थर्ड रहेगा ना ये? हाँ, u is equal to log x, सेकेंड इक्वेशन. सो बाय 2. ये आ गया तुम्हारा du by dx. सो देखो एक टर्म आ गया. अभी क्या करना है? सेकेंड टर्म कौन सा चाहिए? सेकेंड टर्म dv by dx. सो नेक्स्ट वी पिक अप इज v. नेक्स्ट v is equal to, it is log x raised to x, ना? Log x raised to x. This is by equation 3. Okay. Therefore, log v is equal to log of log x raised to x. Therefore, log v is x into log x, log of log x. ठीक है? This is again the same law. Log of a raised to m is m log a. Now what to do? Differentiate. So differentiate. करो. And catch up with you. किधर हो देवाशीष? कल भी नहीं आया, आज भी नहीं आया. Comes one day, then he misses 1 month. कैसा होगा? वीडियो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम क्या रहता है कि if you learn from video recording, you can't ask questions. The advantage is you can see it 10 times. इसका फ्लो समझो. When it's plus or minus, you take u, उसका log लेते हैं. Instead you take u, you take v, जो कुछ रहे. And then you follow whatever was done for logarithmic differentiation. उसका log लो, use log of logarithms. Then you take the derivative, shift the term on the other side, rewrite it. Okay. So same thing. It's the same principle. उसमें चलते रहते हैं. So if I take this one's derivative directly, this is going to be, therefore I'm not writing that differentiating and all. So 1 upon v into dv by dx, और ये product rule में आएगा. So it will be x into, now you should be able to do this orally. Okay. At present लिख रहे हैं हम लोग, but you should be able to do it. इसके क्या आएगा आंसर actually? X into 1 upon log x into d by dx of log x is 1 by x. So x और x cancel हो जाएगा, बचेगा क्या? 1 by log x, right? Plus log of log x into 1. So that's the answer. 1 by log x plus 1. ठीक है? 1 by log x plus log of log x. ठीक है? So this will be plus log of log x into d by dx of x. So therefore 1 upon v dv by dx is equal to x into 1 upon log x into d by dx of log x plus log of log x into 1. By the time your board exams comes, you will be hoping and praying you get such a question like this, because it's very easy. इसमें कुछ गलत होने का chances कम रहते हैं. Okay, very very. You will be hoping and praying. ये आया तो बहुत अच्छा रहेगा. X into 1 upon log x into d by dx of log x is 1 by x plus log of log x.
So this x and x cancels, and so therefore dv by dx is equal to v into 1 upon log x plus log of log x. ओके, इधर तक हो गया ना. हम लोगों ने ऊपर कितना इक्वेशन 5 तक मार्क किया था ना. ओके, तो अभी ये जो du by dx आया है इसको इक्वेशन 6 मार्क करना है. ठीक है, एंड dv by dx आया है उसको इक्वेशन 7 मार्क करना है. ओके, ये दिस dv by dx that we have got we will mark it as equation 7. ठीक है. नाउ हम लोगों को ये du by dx and dv by dx we need to substitute it in which equation? In 4, I think so. In equation 4 में substitute कर dy by dx ढूंढना है ना. So we want to substitute in equation 5. Correct? We want to substitute in equation 5 what is du by dx and what is dv by dx. So सिर्फ उतना लाइन लिखना है, substituting from 6 and 7 in equation 5. अच्छा, I didn't write it. Okay, sorry. And so what was this? This was log x raised to x. Log x raised to x into 1 upon log x plus log of log x. And this is by equation 3 ना. And this is equation 7 now. इसको equation 7 कर. So substituting from 6 and 7, substituting from 6 and 7 in equation 5, we get dy by dx is equal to, now what is du by dx? It is x raised to log x into into 2 log x upon x. Okay, so into 2 log x upon x plus dv by dx, which is log x raised to x into brackets 1 by log x plus log of log x. हो गया. ठीक है, दिमाग ठंडा रखो. That's all. Nothing more you require. एक समझ लो, प्रैक्टिस करो, and दिमाग ठंडा रखो. ठीक है, keep your head cool. ठंडा ठंडा cool cool. Okay, so now next is x raised to x plus a raised to x. So this is very easy. So we'll take few solved examples also, नहीं तो ये कम practice हो जाएगा. X raised to x plus a raised to x. So when I was teaching in the class, we took many more examples. बहुत सारे लिए थे examples, but अभी we need to finish things. इसलिए ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ. इसलिए जो लोग थे तभी उनसे रे फोटो लो, जेरोक्स लो, whatever. Now see this. This is x raised to x plus a raised to x. So this is plus definitely. Correct? So we'll have to take this derivative separately. इसमें से ये जो a raised to x derivative है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास. Correct? We have the formula. d by dx of a raised to x is a raised to x log a. So सवाल सिर्फ इसी का है. Correct? So what we will do is we will say let, this is equation 1, so इसमें u और v लेने की जरूरत नहीं है. We'll say let u equal to x raised to x. That is sufficient for us. At the moment I write u is equal to x raised to x, this problem is the first problem for logarithmic differentiation. कल जो पहला परसों जो कुछ किया था, first problem x raised to x, logarithmic differentiation जब चालू किया, the first problem. So solve. So it's the same problem. So solve. Okay? कर लो solve. Try on your own. पीछे से नहीं देखा तो भी चलेगा. You can do on your own.
वही तो करना है, लॉग लेना है, यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम्स, टेक डेरिवेटिव्स. वंश, तन्मय, सब ऐसे मत. एक साथ हर्षी, अनन्या, सीधे इतना पढ़ा लिखा था. सर क्वेश्चन तो लिखा है, आप 1.5 मार्क्स दे दो. So I was going to say 1 minus 1.5. So I should 1 minus 1.5 कितना होता है? माइनस हाफ ना, तो माइनस हाफ मार्क्स देना चाहिए. ओके, आई वाज एक्चुअली चेकिंग फॉर योर पेपर्स. वेदांत, चार्ष्य, वैष्णवी, आयुषी, रोहित, नेत्रा, कौन, वेदांत, नेहा, आशना, कृष्णाली, मंगेश, संकेश, राजवीर, साक्षी. साक्षी को सबसे बेस्ट मार्क्स आया, 0 ना. बिंदास रहने, इट्स गुड. झंझट नाही, थोडा अजून अभ्यास केला असता. बिंदास. श्रेय, यश, विघ्नेश, तनुजा, लाबोनी. 7. I gave you a paper. Sonia, Shambhavi. ठीक है, इधर ही रख देता हूँ मैं, यानी कि मंडे को लाने के लिए भूल गया तो रहेगा. तो ये क्या आएगा? u is equal to x raised to x. So log u is equal to log x raised to x. So log u is equal to x into log x, right? अभी इसको डिफरेंशिएट करो. So ये 1 upon u du by dx is x into, I'll take it directly now, 1 by x plus log x into 1. And so du by dx is u into 1 plus log x. u कितना है? x raised to x into 1 plus log x. Now see, remember one thing, ये इसका ये फॉर्मूला लर्न करके रखो, ठीक है? d by dx of x raised to x is x raised to x into 1 plus log x. ये फॉर्मूला लर्न करके रखना है, बिकॉज अगर पेपर में कुछ गड़बड़ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो झोल झमेला हो गया, तो डायरेक्ट लिख देना d by dx of x raised to x is x raised to x into 1 plus log x. Now once you write that, the examiner has to decide whether to give you marks or not. काट नहीं सकते, he has to decide.
सो ही मे नॉट गिव यू फुल मार्क्स बट हाफ मार्क्स तो दे देगा, बट गलत रहेगा ये सॉल्विंग अगर गलत हो गया तो तुमको 100% जीरो मार्क्स मिलेगा, राइट। सो लर्न करके रखना है, तो पूछने तो ये आंसर लेके आना है, ठीक है। इतना बुरा दिन नहीं आएंगे तुम्हारे। ओके, सो ये du by dx हो गया। द ओनली वे वी विल राइट दिस इज d by dx ऑफ x raised to x is x raised to x into 1 plus log x. So therefore dy by dx is equal to du by dx, yeah, d by dx of x raised to x plus d by dx of a raised to x, and the reason for this is differentiating equation 1. जो इक्वेशन 1 दिया था हमको y is equal to x raised to x plus a raised to x, उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ओके। एंड ये जो आंसर आया है इधर, इसको इक्वेशन 2 बोल रहे हैं, राइट। सो नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है, दैट्स ऑल, प्रॉब्लम इज डन। d by dx of x raised to x कितना है, x raised to x into 1 plus log x, this is by equation 2, and d by dx of a raised to x is a raised to x log a, so by 2, okay, ये हो गया। So that's the answer, finished. dy by dx is this, हो गया, खत्म, right? Okay, last problem for today. कितना है टाइम, 10:44. If everyone would have come, मैं थोड़ा सा और एक एक्सटेंड कर लेता था, I might also little bit. ये तुमको इतना एक दिन सिर्फ बुलाया, एक ही घंटा, बराबर है ना? It's not correct. बराबर नहीं। You call people so far, तीनों के तीनों दूर से आए ना, तो where you stay? बाने। You तो out of पुणे रहती है। You are also in बाने। You stay near by only, three. किधर? कपल में। Okay. She's बालेवाड़ी, किधर से आती है? मैं तो पढ़ाई छोड़ देता था। ऑटो या बस? ऑटो यू गो, योर ओन ऑटो या कोई भी पकड़ सकते, फिक्स्ड ऑटो। How much they charge? पहले अभी 9,000। तो और 2-3 जन को लेके जाने के साथ, और 2-3 जन को लेके जाने के साथ, या 3,000 लेकिन अभी कॉलेज से मतलब कोई मिला नहीं था उस टाइम, मैं ढूंढ रही थी बट कोई उधर मिला। हाँ, 3 में बस में तो उतने ही जाने वाला। हाँ, कितना होगा? 3,000 for 6 months। वो क्या है सर, अच्छा, पास लिया इसीलिए, और अभी सिर्फ स्टूडेंट्स को मिलते हैं ना पास, टिल 12th स्टैंडर्ड। चलो मैं वापस 12th में जाऊँ and enroll in some college. Okay, right. So the third one, y is equal to 10 raised to x raised to x plus 10 raised to x raised to 10. Y is equal to 10 raised to x raised to x plus 10 raised to x raised to 10 plus 10 raised to 10 raised to x. Okay? तो क्वेश्चन लिखने में कंफ्यूजन होता है। हाँ, you have to decide लगेगा क्या। This is right now in which form? A raised to f of x. This is also a raised to f of x. This third one is also a raised to f of x. ठीक है, तो इनके डायरेक्ट डेरिवेटिव्स आ सकते हैं। a raised to f of x का डेरिवेटिव क्या है? a raised to f of x log a into d by dx of f of x. तो अभी first one if you see what will be its derivative, it will be 10 raised to x raised to x into log 10 into d by dx of x raised to x. तो x raised to x का previous problem यही आंसर आएगा,
x रेज टू x इंटू वन प्लस लॉग x, तो वो निकाल सकते हैं, सिर्फ उसके लिए यूज करना पड़ेगा. This one 10 raised to x raised to 10, so it's a raised to f of x log 10 into d by dx of x raised to 10. So x raised to 10 will be 10x raised to 9, and this one is 10 raised to x log 10 into d by dx of 10 raised to x, that is 10 raised to x log 10. So ये आ जाएगी. So सिर्फ ढूंढना इसके लिए. Okay, only for the first one, not for all three. We had done this problem where we had taken for all of them we had taken log. The reason is मुझे practice देना था. That was not my concern how to solve the problem that time. We took log, like we took this is u, v and w, and हर एक के साथ log u, log v, log w सब करके हमने solve किया था. And then we solved the next day what I am right now saying. But that was because I had to give the practice, तो तभी कर रहे थे. You can then copy it, try it at home. U, v, w लो और log से करो, practice हो जाता है. And then see whether your answer matches with whatever we are doing. ठीक है? So the only part I'll have to take is the first one का x raised to x. So I'll say let u equal to x raised to x. Find du by dx for me. Same अभी आप ऊपर ही solve किए. I am writing directly x raised to x into 1 plus log x. You all do the whole part. किया. पूरा खत्म करो. जो ऊपर वर्तित solve के लिए first problem में x raised to x बहुत बार हो गया. Correct? Many times it has happened. So Labani, you eat fish every day? No sir, very less, very less. Why? Sir, मेरे को तो नहीं बस घर पे सब खाते हैं. Whenever it is. Okay. Normally Bengalis means fish. Normally sir. इसे बहुत ज़्यादा normal कर दिया. No, because one of my, I said ना my क्या बोलते, roommate was there. He was Bengali only. So he used to like fish over the even Durga Puja and all. He said without fish and all. मतलब fish नहीं तो क्या Durga Puja? ये कौन सा पूजा है? सर मैं कोलकाता गई थी एक बार. उधर my sister enjoyed fish जी भर चिलक. मैंने सिर्फ दाल चावल steamed rice और दाल खाई. I'm not very fond of fish. You know, but there you all have ponds ना उधर कोलकाता में if you go. घर नहीं है सर. घर नहीं. अच्छा, जो विलेज में रहते थोड़े से, एवरी हाउस ना दे हैव अ पॉन्ड. हर एक घर, इवन छोटा झोपड़ी भी रहेगा ना, मीन्स अभी घर सपोज 1000 स्क्वायर फीट का जगह लिया है, वो घर बांधेंगे 300-400 स्क्वायर फीट में, छोटा घर में रहेंगे, लेकिन सामने एक पॉन्ड रहता है, एंड इन दैट पॉन्ड दे विल कीप फिश. तो फिश उधर ग्रो होते रहते हैं, सो दे टेक द फिश फ्रॉम देयर एंड दे लीव. It's like fish farming, individual people. No, there's no option. ना, if you go in Bengal, उधर जितना बारिश गिरता है, and the amount of water that you get over there, तो fish है इतने कि there's nothing else you can do than eat fish. If you don't, then इतना fish हो जाएंगे उधर के जी नहीं सकेंगे, तो इतने fish हो जाएंगे. So fish is available in plenty. So everyone has their own pond. उसमें से fish होता दिखाते. So that's what he was telling. Still keeps calling me, आ जाओ बंगाल को, आ जाओ. जाने को होता नहीं, अकेला किधर जाना. It's like okay, you can go, but you know, it's the coming back journey is then very tiring. It's like you're alone. क्या ऐसा? Okay. And still, I had been to Kolkata once. Only once. मैं हम लोग कितना 2 दिन ही थे. Didn't see much. ठीक है. Went for a week. For? A week. उधर ऐसा कोई रहता नहीं ना खाने का तो. So no one stays over there. Everybody settled Pune. Settled in Pune. Pune only. Papa.
So differentiating equation 1 with respect to x, we get dy by dx is equal to d by dx of 10 raised to x plus d by dx of 10 raised to 10 plus d by dx of 10 raised to x which is equal to ये 10 raised to x हम लोग ने it will be 10 raised to x into log 10 into d by dx of x raised to x plus 10 raised to 10 log 10 into d by dx of x raised to 10 plus 10 raised to x log 10 into d by dx of 10 raised to x. So that is equal to, reason is d by dx of a raised to f of x is equal to a raised to f of x into log a into d by dx of f of x. You know, when I had started teaching, I used to shout a lot. I used to be very angry with everybody. We had just started. सबसे ज़्यादा गुस्से से बात करना. But then that is not totally my fault. I had a friend who was teaching already for 7-8 years, something like that. And so he said you've got to be strict. मैंने कहा हाँ, experience है उसका. So I also used to be strict. कोई talk little bit ऐसे you. ऐसे. तो यूजुअली उल्टा होता है फिर एज टीचर्स ग्रम्पी से हो जाते हैं इवन इन कॉलेज जो यंग टीचर्स है फिर भी ठीक है थोड़ा काम है जो ओल्ड टीचर्स होते हैं ग्रम्पी से या मेरा उल्टा होता. Because I was told you have to be strict. Like I said, you wouldn't have been able to talk with me so freely. मैं बात ही नहीं कर सकते थे तुम थोड़ा भी बात करने नहीं shut up. Something हो गया ऐसा बहुत बात नहीं करने का थोड़ा सा सिर्फ ध्यान देने का सिर्फ is that. Eventually then it's like my peanut brain just figured out there's no point doing these things. Correct? There's no point keeping the class quiet and okay, let's go with this. 10 raised to x into log 10 into ये already हमने ढूंढ लिया है. It's x raised to x into 1 plus log x. That's by equation 2. Plus ये second part 10 raised to x raised to 10 log 10 into 10x raised to 9. Correct? x raised to 10 है, so उसका derivative आएगा 10x raised to 9. And then the last term which is 10 raised to x log 10 and d by dx of 10 raised to x is 10 raised to x log 10. वो खुद ही a raised to x है, a raised to x log a. ठीक है, आगे अभी सिर्फ थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं क्या देखना है. तो फर्स्ट टर्म में कुछ नहीं कर सकते. log 10 को कॉमन ले सकते हाँ करेंगे ना, log 10 ले सकते हैं या you can keep it like that also. So we can take log 10. So log 10 अगर कॉमन दिया, it's no point taking log 10 कॉमन. वो 2 या 3 नहीं है. We'll keep it as it is. What we'll do is we'll write this as 10 raised to x into log 10. ये ऐसे कैसे रहेगा, x raised to x into 1 plus log x plus this is now 10 raised to x raised to 10. And see, I'm adding over here plus 1 because of this 10x raised to 10 into 10. So it's law of indices for this one. A raised to m and this is a raised to n. So it's 10 raised to 1. So it is a raised to m plus 1. This boy, कितने बजे आ रहे हो? 11 बजे था ना. अरे क्या दिमाग है? तुमको मैसेज भेजा था ना कल. सर वो व्हाट्सएप खराब हो गया था. व्हाट्सएप खराब हो गया. अभी खत्म हो रहा है क्लास. क्या बात है? 9:30 को चालू किया था.
वी हैड सेंड द मैसेज, स्पेसिफिक तुम्हारा नाम के साथ भेजा था, तन्मय, साक्षी, स्वरा एंड देवाशीष, प्लीज नोट करके। ठीक है, हम लोग रिकॉर्डिंग कर लिया, इट्स नॉट अ मेजर इशू, बट वेर स्टे ये साकर नगर ना, साकर नगर, ठीक है, क्या मतलब, ठीक है, वॉट एवर, स्टिल ओके। तो ये देखो, दिस इज a रेस टू m एंड दिस इज a रेस टू n, तो इधर रेस टू 1 है, सो वी हैव दिस लॉ ना, a रेस टू m इंटू a रेस टू n इज a रेस टू m प्लस n, इसीलिए वो x रेस टू 10 प्लस 1 लिखा, ओके। एंड देन अगर वो लिख लिया है मैंने, तो बचा क्या है अभी, इंटू एक्स रेस टू 9 इंटू लॉग 10, ठीक है। एंड नाउ द थर्ड टर्म, उसको भी लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज कर लेंगे, सो द थर्ड टर्म हैपेंस टू बी प्लस 10 रेस टू x प्लस x, again see this is 10 raised to 10 raised to x and this is 10 raised to x, so it's a raised to m, a raised to n, so it's 10 raised to 10 raised to x plus x, a raised to m plus n, बचे हुए टर्म्स के log 10 and log 10, so that is log 10 the whole square, okay, so that's the answer for this. So divided by 45 dx of 10 raised to x raised to x. 10 raised to हाँ x raised to x log 10 असतं. x raised to x log 10 असतं. 10 raised to x raised to x log 10 x raised to x into 1 is log. नाही बनणार होतं म्हणजे हाँ त्याचं x raised to x असतं ना, म्हणजे कोणाला नाही. I didn't get the question. सगळं इकडे 3 raised to x raised to x होतं ना, x raised to x log. हाँ x raised to x log. असं केलं तर तसं झालं. No, we could have taken ना, पण हे डायरेक्ट घेतलं ना आपण. Over there also we could have taken e raised to x raised to x into d by dx of x raised to x. That could have been x raised to x log. हाँ. So here we found out na this x raised to x derivative, we have already found it out by equation 2. So that part is this one. So this is 10 raised to x raised to a raised to f of x into log a into d by dx of f of x, which is x raised to x. We could have done that with x raised to x, e raised to x also. It would have been e raised to x into log e is 1, so d by dx of x raised to x. So it's x raised to x into 1 plus log. See the answer. क्या है आंसर? See the answer. E raised to x into x raised to x into 1 plus log. ठीक है? तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब सिखा रहे हैं हम. ठीक है? Okay, doesn't matter. तुम्हारा जो कुछ मिस हो गया, टीचिंग अ स्मॉल पार्ट स्टिल, ओके, तो हम लोग कर सकते हैं और भी थोड़ा सा एक काम कर लेंगे. एंड टेक्स्ट बुक किधर गया? सो विल चेक अप मे बी 1 or 2 problems of derivatives with implicit functions. Okay, I think this was the problem I gave yesterday. यही तो प्रॉब्लम था कल, राइट? तो y cube minus 3y square x is equal to x cube plus 3x square y. Sort example, right? Laboni, ये प्रॉब्लम था ना? Solve example, right? So let's see how to solve this implicit functions. So इधर आ जाते. Now implicit functions क्या देते हैं? You can leave some. How many pages you'll have to leave? Just help him out. कितना pages on an average आज का? So हम लोग हाँ 5 pages. So we are like crime master go आए तो कुछ तो देखे ही जाएंगे, लेके नहीं जाते, देखे करेक्ट. सो 11 हो गए, मे बी 15-20 मिनट्स.
We started also late ना 9:50 को चालू so it's okay. तुमको भी अच्छा लगे हाँ around 11:15 just do the basic one or two problems you will be able to do on your own also many of them okay. So now what are implicit functions? So see, suppose I write y is equal to log x the whole square plus 3x square, something like this. If I write y is equal to say sine of 5x plus cos square 9x, कुछ भी ऐसे लिख लिया. y is equal to जो हमने अभी प्रॉब्लम सॉल्व किया 3x minus 1 upon it was some 2x plus 3 into 5 minus x the whole square. ये सब कुछ फंक्शंस मैंने लिख ली. But I'll write now a function like this: y cube plus 3x square y minus 2xy is equal to 0 or 2, okay, or let's take 2xy square, or y is equal to sine xy, okay, or y square is equal to 3xy plus 25, something. All these equations I have written. Now, if you see the first three expressions, if I ask you what is y, you will be able to tell me it's log x the whole square plus 3x square, right? Or sin 3x plus cos square, so around cube root of whatever it is. Okay, you can answer. Y क्या है बता सकते हो. But if and we know how to find the derivatives of these functions. ये हमने सीख लिया. How to find the derivatives of log x the whole square. You know it's 2 log x into 1 by x. Plus 6x, इसका आंसर 5 cos 5x, इसका minus 2 sin 9x जो कुछ आ रहा है. And then this is y is equal to अभी हम लोग ने सॉल्व किया 1 by 3 log of that, करके आंसर आ जाएगा. We can find that. But in such cases, how to find the value or how to find the differentiation of this functions? इसका derivatives कैसे लेंगे? तो ये जो functions है ऊपर के तीन, they are basically considered as explicit functions. ठीक है, explicit, whereas these are considered as implicit functions. इसको बोलते हैं implicit, which we don't know its direct value, just like you have explicit telecast. तो ये चैनल पे explicit आ रहा है और कोई चैनल पे नहीं आ रहा. Implicit means what? It is a mixed part. It's like y is equal to sin xy. But what is y? No, y is sin xy. Agreed, y is sin xy. But what is y? y क्या है? y is equal to sin 5x. I can understand. कुछ तो x है, उसके हिसाब से y हो गया. But तुम इधर बोल रहे y is equal to sin xy. It's like a mirror. इधर एक मिरर रखा है, इधर एक मिरर रखा है, और तुम बीच में खड़े हो. तो इसका इमेज उधर है, उसका इमेज इधर है, तुम्हारा इमेज उधर है, वो पूरा कचरा हो. Right? So that's what is basically implicit functions. So इसका derivatives कैसे लेते हैं? तो one result we have already seen. तुम्हारा फेवरेट d by dx of log y, and that is 1 upon y dy by dx. Okay, so if y is an implicit function, एक result हमारे पास already है. Though it was from explicit part, we already have d by dx of y is equal to log y is 1 upon y dy by dx. Okay, but now suppose I want to find d by dx of y square, for example. So for implicit functions हम लोग क्या बोलते हैं कि we will take its derivative by chain rule. So it will be d by dy of y square into dy by dx. This is actually what is chain rule. D by dy of y square, that is you're differentiating first with respect to y, then you're differentiating with respect to x. So here y is the like the outer function and y itself is the inside function. दोनों एक साथ. Okay, so it is d by dy of y square into dy by dx. यानी कि ये जो y square है इसका डेरिवेटिव ऐसे ले लो as if it was with respect to y only. So if it was with respect to y, उसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 2y, and then multiply it by dy by dx. Okay, that's what this method is. So to find d by dx of y square, what you have to do? You have to take its derivative as if it's a normal derivative, 2y, and then multiply by dy by dx. dy by dy dy by dy of y square. Y square. So you are initially taking the derivative with respect to y as if it was y only, and then you are multiplying by dy by dx. Okay.
So if I want to find the derivative of suppose e raised to y, then this will be take the derivative as if it was with respect to y only. So it will be e raised to y and then multiply by dy by dx. So every time you come across any function of this type, उसका नॉर्मल जो डेरिवेटिव लेते थे तुम वैसा ही लेना है y के साथ, बट यू मल्टीप्लाई लास्ट बाय dy by dx. ठीक है, समझ में आ रहा है ये रूल, राइट? So note down these things, okay? And so you can, I'll just write this ऊपर, write these expressions also, okay? तो ये तीन you can consider as explicit. सर भाई वाले में आज मिस्टेक हुआ था ना, हाँ तुमने उसमें किया ना, मुझसे याद है तो मैं पूरा आंसर सही हो जाता ना. you wrote dy by dx, you didn't write dy by dx, गलत हो गया ना, एक टर्म ही चले जाते हैं ना उसमें से, वो दिखने के लिए छोटा सा मिस्टेक है, बट तो पूरा टर्म ही निकल जाता है, so the whole answer falls. Sir gave them holiday for accounts today, so शिफ्ट कर देंगे. मुझे लगा तुमने देखा था कल मैसेज, दिस बॉय डिडंट सी द मैसेज, क्या भूल गई? सर वो कल मेरे पास मेरा मोबाइल ही नहीं, मोबाइल नहीं था, मैं घर पे भूल गया था दुकान में. क्योंकि मैं यूजुअली ऐसा कुछ हो गया ना ऐसा, तो आई नॉर्मली see if people have seen the message or not, and I think so. तुम्हारा दिखा था कि तुमने देखा है करके. You are among the first person to see, I guess. हाँ, तुमने 6:30 को ही देख लिया था, तुम्हारे रिकॉर्ड के हिसाब से 6:30 को ही देख लिया. नहीं, मेरी बहन के पास था. So she should have told you. So I normally check, अगर कुछ भी चेंज होते रहता है ना, we send a message and then we can keep checking it. Has everyone seen it? तो एक टाइम देख लिया ऐसा इंफॉर्मेशन आ गया, then it's okay for us. बट अगर ऐसा हो गया कि इसने देखा नहीं है, तो then we normally call it. तो लाइक फॉर एग्जांपल अभी स्वर है, उसने देखा ही नहीं है, तो देन आई विल कॉल अप सुबह या उसी दिन रात को 11 बजे. तुम्हारा भी देख लिया था मैंने. सो आई नॉर्मली चेक. समटाइम्स हो सकता है मैं भूल जाऊँ, बट वी नॉर्मली चेक. एनीथिंग कुछ तो डेविएट होते रहेगा, वी सेंड अ मैसेज एंड देन वी चेक किसने सबने देखा है. नहीं देखा रहेगा तो देन वी विल कॉल. कभी कभी क्लास भी बहुत बारिश रहेगा, कभी कभी क्लास कैंसिल हो जाता है, सो वी कैंसिल कर देते क्लास को. मैसेज भेज दिया, सब सुबह 6 बजे भेज दिया ना मैसेज, आई चेक अगेन एट 7 o'clock, हैव एवरीवन सीन इट. किसी ने देखा नहीं रहेगा उसको फिर कॉल करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अभी क्लासेस एट 9:30, सपोज 7:30 को डिसाइड किया कि क्लास नहीं रख रहे, सो वी सेंड द मैसेज एंड इफ यू डोंट सी टिल 8 o'clock यू विल गेट अ कॉल, क्योंकि अभी तुम लोग दूर रहते हो ना, सो यू हैव टू स्टार्ट बाय 7:38, तुमको निकलना पड़ता है. सो वी नॉर्मली कॉल अप कि नहीं निकल. अभी वो कॉल भी नहीं उठाए तो दैट यू ओके. सो दैट इज दैट. तो ये हो गया. ओके, अभी इसका ये बेसिक, हाँ ये लिखना है ना तुमको, ये भी लिखना है. dy dx of log y, dy dx of y square. ये जो भी रिकॉर्डिंग देखेंगे उसको बहुत बोर होगा और टाइम पास भी बहुत किया है. Okay, now with this one done, so suppose you have a problem like
एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3xy इज इक्वल टू 5 और इसका डेरिवेटिव लेना है. द क्वेश्चन इज फाइंड dy by dx. वो वाला करो ना y square equal to 3x y स्क्वायर इक्वल टू 3x y का चिन्ह वो बाद में करेंगे, एकदम डायरेक्ट हार्ड प्रॉब्लम नहीं करेंगे. हार्ड मीन द सेंस जो सीख रहे हैं उसके लिए हार्ड है, पहले ही प्रॉब्लम है आउट ऑफ द वे ऐसा नहीं कर सकते. सो इसको क्या करना है, सी द मेथड. ओके, यू टेक द डेरिवेटिव. ये प्रॉब्लम्स इतने आसान है कि इसको सिर्फ डायरेक्ट डेरिवेटिव लेते जाना है, इसमें कुछ सोचने का नहीं. ओके, यू हैव टू बी लाइक अमिताभ बच्चन, सोचा ना समझाना रख दी निशाने पे जान. तो सर घर से निकले बांधे कफन, बिंदास आ जाने. ओके, सो टेक द डेरिवेटिव. सो जो रूल्स है डेरिवेटिव के करते जाओ. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, जस्ट आई मेक दिस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अदरवाइज है ना एक्स वाई का मीनिंग नहीं रहेगा, बिकॉज इट विल नॉट रिमेन अ इम्प्लिसिट फंक्शन. एक्स स्क्वायर वाई लिखा तो इट्स नो लॉन्गर एन इम्प्लिसिट फंक्शन, बिकॉज वाई इज इक्वल टू 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा. ओके, सो दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3xy विच इज इक्वल टू 0. ठीक है ना. ये क्या है, प्रोडक्ट है, दो फंक्शंस है ना. y कांस्टेंट नहीं है इधर, y इज अ फंक्शन ऑफ x, इट्स मिक्स इंटरमिक्स्ड विद x, सो इट इज अ फंक्शन ऑफ x, बट वो झोल झमेले में का फंक्शन है. सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर uv प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 into d by dx of xy is equal to 0. Right? Therefore, x square into, you understand one problem you will be able to do everything. There is nothing in this problem difficult. Nothing. Concept समझो. X square into d by dx of y square is 2y and then you multiply by dy by dx. You should forget this part, which this Laboni forgot. So she lost 3-4 marks. So y square into d by dx of x square is 2x plus 3 and then brackets, because the product rule is there but it is with the whole multiple of xy. So you have to put a brackets over it. So 3 into and use the product rule, x into dy by dx plus y into d by dx of x, which is equal to 0. So therefore x square into 2y, okay, so I will still keep it as it is, though we can write it as 2x square y, लिख रहा हूँ मैं इसे, into dy by dx plus 2xy square plus 3 into x into dy by dx plus y into 1, which is equal to 0. You know, my real feeling is most people should actually come for revision या जो कुछ ये हो रहा है, they should come, because I'm going very slow. हाँ सर, बहुत Okay, much slow. Because I have time at my disposal. उधर 1.5 घंटा ही रहता है, इधर टाइम है मेरे पास. मुझे चाहिए तो आप यहाँ में 3 घंटा भी दे सकते हो, राइट? चाहिए. Okay, so that's the thing. So therefore 2x square y into dy by dx plus 2xy square plus 3x dy by dx plus 3y is equal to 0. So what is the first step you do? Go on taking the derivatives. Wherever you get a function of y, take its derivative and multiply by dy by dx. Okay, that's the second step. Third step में dy by dx सब left hand side में रखना है. जितने भी dy by dx terms है, everything has to be brought on left side. If they are on the right hand side, bring them on the left hand side. ठीक है? Right now there is nothing on the right hand side, everything is on the left hand side. So ये एक dy by dx term है, ये एक dy by dx term है.
सो ये मैं साथ में लिखता हूँ. सो 2x square y dy by dx plus 3x into dy by dx is equal to. So जो non dy by dx terms है, which are they? 2x y square and 3y, they have to be taken on the other side, right hand side. So ये जब बाहर जाएंगे, it will become minus 2xy square and minus 3y square. Okay. Now either, huh? It's 3y also. Okay, so you can either write it like this, यानी कि sign change करके इधर लेना है, and sometimes that can be confusing because one will be plus, the other will be minus, then फिर plus and minus, तो उसमें दो झमेला हो जाता है. So what I recommend is that instead of doing it like this, इसको minus sign लिख दो, brackets लिखो, and ये जो terms है with their signs, इसके जो sign है वो sign के साथ इधर लिख लो, 2xy square plus 3. Okay, so chances of error are gone because तुमने उसको नेगेट कर दिया है ऑलरेडी. करेक्ट. बेसिक क्या है, उस तरफ जाके साइन अपोजिट हो जाता है. प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा. सो यू ऑलरेडी मेड इट माइनस, एंड देन जो टर्म्स है वैसे के वैसे ब्रैकेट्स में दिख रहे हैं. सो द चांसेस ऑफ एरर आर टोटली गॉन. ठीक है. सो ये हो गया. नाउ हियर टेक dy by dx कॉमन. सो you'll have 2x square y plus 3x into dy by dx is equal to minus of 2xy square plus 3y, and therefore dy by dx is equal to minus of 2xy square plus 3y divided by 2x square y plus 3x, and that completes the problem. Okay, that's all that is there in this kind of problems. This is all. अभी problem उनको कितना भी घुमा फिरा के देने दो. The process is this one. Okay, nothing changes. Process यही है. ठीक है. What you have to do? Go on taking the derivatives. जिधर भी y दिखेगा उसको डेरिवेटिव ले लो. नॉर्मल जो रहेगा डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय dy by dx. Get all dy by dx terms on the left hand side, all non dy by dx terms on the right hand side, and then take dy by dx common, and जो भी बचे उसको लेके जाओ डिनोमिनेटर. Okay, nothing. That's all the concept. Okay, so now that problem which we had yesterday, so हम लोग कर लेते हैं. So you will understand it was easy. There was nothing in that problem. Unnecessary झोल झमेला किया. Y cube minus 3y square x. और I will solve it later in the class बाद में. ठीक है, 2 बार हो जाएगा तुम्हारा रिवीजन. So y cube minus 3y square x is equal to x cube plus 3x square y. X cube plus 3x square y. So differentiate on both the sides. Differentiate on both the sides. So d by dx ये एकदम बैल के जैसे जाने का, बिंदा सोचने का नहीं, कुछ नहीं, सीधा सॉल्व करना है. So this is d by dx of x cube plus 3x square y. Maybe one step you should write before differentiating our equation with respect to x. ठीक है. सॉल्व करने d by dx of y cube minus 3 into d by dx of y square x is equal to d by dx of x cube plus 3 into d by dx of x square y. Okay, इधर तक. Okay, now what we have to do? Take its derivative. So if you see y, take its derivative as if it's a normal term and then multiply by dy by dx. So this will be 3y square dy by dx minus 3 into brackets. बिकॉज ये देखो अभी ये माइनस भी है, 3 भी है उधर,
and this is on a product rule, so that brackets is very important. I put this bracket actually इसको square bracket है minus 3 into, so ये product rule है, so it's y square into d by dx of x plus x into d by dx of y square is equal to d by dx of x cube is 3x square plus 3 again, and this is now product rule, तो bracket, ठीक है, and so it's x square into dy by dx plus y into d by dx of x square. So now you 2-3 people, तुमको 1-2-3 चैप्टर्स एक साथ जरा ज़्यादा आ जाएंगे, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, तो 3 महीने नहीं केले ना, थोड़ा तो केवळ तरी अभ्यास करायला पड़ेगा, करेक्ट. मई जून जुलाई 3 महीने नहीं हुआ है, तो वो वापस करने में टाइम तो जाएगा, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा अभी. डू दैट 3y square and whatever we will be doing in the class is going to be much easy, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है. minus 3 into y square into 1 plus x into d by dx of y square, so इसका डेरिवेटिव 2y आएगा into dy by dx. डेरिवेटिव ऑफ तुम्हारा ये स्टेप क्या है ना, okay, she did is she wrote x into 2y. okay, गलती सिर्फ उतने हो, प्रॉब्लम गलत हो, बट वही तो है ना, इसीलिए तो ध्यान देके तुम लोग बात कर रहे हैं, इसके साथ ये उसके साथ हंस रहा है. बात कर रहे थे, वो तो मेरा काम है डिस्टर्ब करना. अरे यू आज द अदर 12th स्टैंडर्ड, उनको कितना तकलीफ दिया था टेस्ट सीरीज में. दे हैड स्टार्टेड गेटिंग आउट ऑफ 80 75 76 मार्क्स उनको मिलना शुरू हुआ था, तो फिर मैंने इतना डिस्टर्ब किया उनको, इतना डिस्टर्ब किया, सब बेचारे 60 पे आ गए. ऐसे बिकॉज पता नहीं एग्जामिनेशन हॉल में कुछ भी हो सकता है, देयर कुड बी लॉट्स ऑफ डिस्टर्बेंस इन एग्जामिनेशन हॉल, सो तुमको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, डिस्टर्बेंस कितना भी हो तुमको आना चाहिए, करेक्ट. सो जिसको 75 ऐसा मिलता था एंड पेपर इजी था, दैट पर्सन वाज गॉट टू 60, जो 65 पे वो बेचारे 40 पे आ गए. So 3 तो वो तो चलते रहते हैं. So 3y square into dy by dx. अभी what is the main process now? ये सब हो गया है ना, डेरिवेटिव लेके हो गया. So हमारा मेन काम क्या है, और dy by dx को लेफ्ट में लेके आना है. So उसके लिए we'll have to simplify the terms. ब्रैकेट्स को ओपन अप करना पड़ेगा, then only we can bring the terms on the left hand side. So multiply this, minus 3y square, this will become minus 6xy dy by dx is equal to 3x square plus 3x square dy by dx plus 6xy, y into 2x, 2xy into 3 is 6xy, ठीक है. सो dy by dx दो टर्म्स इधर है ऑलरेडी, तो उसको लिख लो, 3y square dy by dx minus 6xy dy by dx, और एक टर्म अभी उधर से आएगा विच इज minus 3x square dy by dx, जो राइट हैंड साइड में था हैज बीन ब्रॉट इनटू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है. अभी इधर जो टर्म्स है ऑलरेडी उनको लिख लो, 3x square plus 6xy, नॉन dy by dx टर्म्स लिख लिया, बिकॉज ये टर्म हमने ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया है, राइट. सो जो बचा है 3x square and 6xy, they both are non dy by dx terms. अभी लेफ्ट हैंड साइड में there is only one term which is minus 3y square which is a non dy by dx term. So इसको इधर लेके आए plus 3y square, ठीक है. Now what is the next step? Take dy by dx common. So bracket 3y square minus 6xy minus 3x square into dy by dx is equal to 3x square plus 6xy plus 3y square.
right? And now take this term in the denominator. That's all. कितना टाइम लगता है dy by dx? ध्यान से शांति से किया काम, कुछ प्रॉब्लम नहीं आती. घाई गड़बड़ में गलती होता है. घाट पे देखते हो ना तुम, अति घाई संकट दही, वो इसको ही बोलते हैं 3y² माइनस 6xy माइनस 3x². अब इसको हम लोग एक थोड़ा और काम कर सकते हैं. वी कैन टेक 3 कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर. It becomes x² plus 2xy plus y² divided by 3 into y² minus 2xy minus x². 3 and 3 cancel हो गए. ये तुम्हारा आंसर आ गया. सर ये स्टेप भी किया था मैंने, ये स्टेप भी किया था सिर्फ एक. हाँ बट तो dy by dx टर्म ही चले गया ना उधर से. हाउ कैन आई गिव यू? टर्म ही भूल हो गया ना. Understood? Easy. It's not hard. It's never hard. Derivatives is never hard. It's just like look. Okay. So one last problem. One एकदम simple one. Simple नहीं, hard नहीं. Okay. इसमें देखो है कितने 3 questions ना, 3-4 questions. So we'll do this because कल छुट्टी है. So we can do later on a Monday. मंडे को थोड़ा सा तकलीफ होगा. 9:30 to 11 इज क्लास. अगेन 11:50. क्यों मंडे को क्या? हाँ तो आप कर जाओ ना. अभी इतना सब होने के बाद मंडे को घूमने को जाने की जरूरत नहीं है. थोड़ा दिन रुक जाओ, बाद में जाओ. बाय बाय. तो मैं ठीक है बट फिर संडे को वापस आ जाओ. वेर यू गोइंग? ऐसा क्यों? पुणे के बाद? हाँ हड़पसर ना. तो हड़पसर से इधर आने को क्या प्रॉब्लम? ऐसे तू ऐसे बात कर रहे बैंगलोर की तरह. हड़पसर ना, सुबह रिक्शा पकड़ने का, आ जाने का 8 बजे. बस बिस मालूम नहीं है किधर से जाते हैं. अगर बस रूट नहीं पता, कैसा आने का रूट नहीं पता, तो सुबह 8 बजे उठने का, 8:30 को रिक्शा पकड़ने का. वो हड़पसर वाला बहुत खुश होगा. इतना दूर उसको पहला सुबह 8:30 को रिक्शा में कोई मिल गया है, 200-300 रुपये का तुमको लग जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा. यू बी वेरी हैप्पी. सो दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज. बाद में 9:30-11 बाद में वापस जाओ हड़पसर. मंडे को हम बाहर जा रहे हैं वहाँ से. हाँ तो जाओ. जेजुरी. हाँ तो उसके बाद जाओ ना, 11 के बाद. ओके देख, यू फर्स्ट डिसाइड व्हाट इट इज. ओके तुम हड़पसर जा रहे, फिर जेजुरी जा रहे. कशाला आते एवढं गोड झालंय तर कशाला करायचं. √x plus √y is equal to √a, and the question is find dy by dx. Okay, so blindly take derivative. D by dx of √x plus d by dx of √y is equal to d by dx of √a. डेरिवेटिव ऑफ √x कितना है? 1/2√x. ओके, तभी डेरिवेटिव ऑफ √y कितना रहेगा? 1/2√y. करेक्ट ना? 1/2√y. एंड क्या करना पड़ेगा? dy by dx से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जब भी डेरिवेटिव लेते हैं y का, व्हाट यू हैव टू डू? टेक इट्स नॉर्मल डेरिवेटिव, मल्टीप्लाई बाय dy by dx. दैट्स अ सिंपल कांसेप्ट. एंड ये क्या है? कांस्टेंट है, so इसका डेरिवेटिव आ गया 0. देन हाँ, डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0. अभी dy by dx टर्म्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में रखने हैं. सो 1/2√y dy by dx. नॉन dy by dx terms go on the right hand side, so it will be -1/2√x. अभी इसको सिर्फ dy by dx is equal to -2√y upon 2√x.
x. 2 and 2 cancels. So it's minus of root y by x. That's done. That's the answer. Simple. Okay. So that's done. So that's all for today. तुम्हारा आधा घंटा ही हो गया, but go and watch this. Okay. I mean,